Hello, my packets of energies. Welcome to Audio Achievers. Okay, you all are aware that you have boundless energy, so use that energy and study properly. Okay, in this video, I'm continuing the carbon and its compounds chapter, and we have already completed the 5 parts. You would have watched the 5 videos of this chapter, and I'm continuing with the 6th part of the chapter, in which we are talking about the chemical properties of carbon compounds. Okay, but before that, the positive thought, which says that the way to get started is to stop talking and begin doing. That means that if you want to achieve something, then you have to stop talking about it and you have to start doing that. Right? Okay, let's talk about the reactivity of carbon and its compounds. Normally, whenever we talk about carbon is comparatively less reactive, as you are aware that whenever the carbon will be found in nature, then it has the ability to join with the other carbon atoms, the property which we call as catenation. Fine. And second thing, that once it forms the carbon compounds, either with the hydrogen or with the other carbon and other compounds, it becomes comparatively less reactive, because once it shares its 4 electrons and its valency is satisfied, it doesn't remain more reactive. Fine. And that's why we say that it is not that much reactive. And when we talk about that, it normally doesn't react at the room temperature. It does not react with the acids like hydrochloric acid, sulfuric acid. Fine. And moving on, next, when we talk about most of the hydrocarbons, you're aware that carbon mostly forms hydrocarbons, and millions of other compounds are formed by substitution of this hydrogen atoms from the hydrocarbons. Hydrocarbons के अंदर जो कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग होती है, that is quite strong, but कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग है, from that bond hydrogen can be replaced and some other atoms or group of atoms can attach or take that position. Fine. So that's how about the reactivity of carbon. You can see this is a single carbon compound and this is double carbon compound. So what happens here, this double bond can get attacked and the things can some new atoms or groups can come and join here. Fine. Moving on further, when we talk about in this your class 10 CBSE NCERT textbook, 4 types of reactions have been discussed for carbon compound. That one is combustion, oxidation, addition and substitution. These 4 types of reactions has been discussed. Fine. Talking the first about the combustion of carbon compound, that how does carbon compound show combustion? So when we talk about combustion, it has been a really important phenomena from the years. Like how? Because this combustion has been a source of energy or heat for all the civilizations. Let it be the use of wood, let it be the burning of wood to make food, let it be the use of coal, petrol, diesel. You are aware that these all are hydrocarbons. And by the use of these hydrocarbons only, we have been getting a lot of activities done. And now also, if you take example of your vehicles, if one day petrol is not available or the fuel is not available, these vehicles will all halt. They will be of no use. Fine. We can convert them into some solar vehicles or something, but that's a different thing. But this combustion process of hydrocarbon has been a very important phenomena. Okay, so what happens in this combustion? Whenever any carbon compound burns its combustion takes place, the product plus heat plus light is obtained. Now, what is this product? This product is mainly the carbon dioxide. Whenever this sufficient amount of oxygen is available, the product formed is carbon dioxide only. Now, next thing comes is the amount of heat produced. How much amount of heat produced will be produced whenever any substance burns, whenever any hydrocarbon burns. You're aware that we have discussed about the calorific value of different fuels. Like we have discussed the calorific value of methane, coal, and different varieties of coal also, anthracite, lignite, peat and all that. So they all differ in the amount of energy they are producing. Now how this energy amount produced differs. This depends on the strength of bonds which are present between these atoms. And you are aware that whenever bonds get broken, some energy is released, and that energy
here in case of carbon compounds is a good amount of energy, and that's why we have been using these as a fuel. Fine. Now let's talk the different forms of carbon are there, how they will form products, or how much energy or what product will be formed whenever their combustion takes place. So when we talk about the allotropic form of carbon, that you are aware that allotropic form of carbon has only carbon-carbon attached in different ways. Fine. So whenever the allotropic forms of carbon will burn, their combustion will take place. What will happen? This carbon will join with oxygen and carbon dioxide, heat energy and light energy is evolved. Fine. Whenever this combustion of methane takes place, you're aware that the LPG cylinders which we use in our houses and the CNGs, these have maximum amount of methane. Methane is the more than 90% amount of this are LPG gases. Fine. So what happens when this methane burns? When this burns, then they combine with the oxygen, the carbon dioxide, the water, the heat and light is produced. Fine. This water again like will be very hot in the vapor condition. Fine. So we cannot observe it very carefully. Fine. Neither can we observe the formation of carbon dioxide. We can only see the flame and the heat and light coming out of it during that process. Fine. Whenever we talk about the combustion of ethanol, okay, ethanol means alcohol group. Fine. So you can see here how we count it. You're aware, 1 carbon atom, 2 carbon atoms and this alcohol group attached. So meth is 1 for 1 carbon atom a molecule, and for eth is for 2. So 2 carbon atoms with the alcohol group attached here. So meth, and here it is having single bonds only. So N and all from the alcohol group. So that's how the group it becomes ethanol. Fine. So when this ethanol reacts with the oxygen during combustion process, carbon dioxide, water, heat and light will be produced. So this is about the combustion of carbon compounds. Moving on further, when we talk about the combustion of saturated carbon compounds, now we have already discussed that carbon compounds can be saturated or unsaturated. Saturated carbon compounds means the one which have the single bond between them only. Fine. So when we talk about how these saturated carbon compounds burn or their combustion takes place. So whenever this saturated carbon hydrocarbons or carbon compounds will be burning, for example here we have taken propane. You can see 1 carbon atom, 2 carbon atoms and 3 carbon atoms. Fine. So this is propane. Whenever this propane's combustion will take place, then the carbon dioxide, water and heat will be produced. And remember, don't forget to balance the reaction. Okay. So keep in mind, whenever you're writing a reaction, remember to balance it. Okay. Now, how these saturated carbon compounds burn? Normally, whenever these saturated carbon compounds will be burning, a clean flame will be produced. Fine. A clean flame will be produced. That means there will be no color or something. You can observe in the methane, whenever this LPG is burning in the LPG cylinders, in our gas stoves in kitchen, there's no particular color or something comes out of it. Fine. You can understand it's quite a clean flame. Fine. So what happens? Sometimes you would have seen that sometimes it also gives blackish कार्बन गेटिंग डिपोजिटेड ऑन द वेसल्स. वो क्यों होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि, और ये जो क्लीन फ्लेम होती है ये नॉर्मली प्रोड्यूस होती है, बट कभी कभी होता है व्हेनेवर द इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इज अवेलेबल. जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की जब बर्निंग प्रोसेस में ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो अगर कंप्लीट नहीं है, मींस प्रॉपर नहीं है, तो क्या हो सकता है? इनकम्प्लीट कंबशन हो सकता है और उसमें सूटी फ्लेम भी निकल सकती है. ओके. So that will have the unburnt carbon particles coming out of that. Okay. So what happens here in this condition? The bottoms of why do the bottom of cooking vessels get blackened sometime? Black क्यों हो जाते हैं cooking vessels के bottom? क्योंकि कई बार होता है कि जो कुकिंग हमारा स्टोव है उसमें जो गैस इसके जो इनलेट्स होते हैं, एयर होल्स जो होते हैं बर्नर में, वो क्या हो जाते हैं? चोक हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने दूध गर्म किया, नॉर्मली फन जाता है, वो जो हमारा मिल्क के पार्टिकल्स थे उसने गैस के जो इनलेट्स हैं वो ब्लॉक कर दिए हैं, और ब्लॉक करने से क्या हुआ है? वो जो पार्टिकल्स अंदर ब्लॉक हो गए हैं वो एयर के सप्लाई को अंदर नहीं चलने जाने दे रहे हैं. तो उससे क्या होगा कि जो बर्निंग प्रोसेस है वो उसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और इस तरह से अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे जो हमारे वेसल को नीचे से थोड़ा काला कर देते हैं. ओके.
एंड दैट्स अदर वे यू कैन सी कि हमारा जो नॉर्मली गांव में जो नॉर्मली सब बहुत सारी जगह पॉसिबल है, नॉट ओनली विलेजेस, अगर हम वुड से कुकिंग करते हैं, वुड को यूज़ करके कुक करते हैं, आपने देखा होगा वेसल नीचे से पूरा काला हो जाता है. क्यों? बिकॉज वाइल बर्निंग ऑफ वुड देयर आर लॉट ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस. उसमें बहुत सारे अनबर्न रह जाते हैं पार्टिकल्स और वही उस चीज़ को ब्लैक बना देते हैं नीचे से वेसल को. फाइन. So that is about combustion of saturated carbon compounds. और हम नॉर्मल लाइफ में कैसे पता करेंगे कि कौन सी चीज़ हमारे खाने में, किचन में फॉर एग्जांपल, वो सैचुरेटेड ज़्यादा उसमें कंपाउंड्स हैं. नॉर्मली अगर हम फैट्स की बात करें, आपने देखा होगा एज आई डिस्कस लास्ट टाइम ऑल्सो, कि अगर हम ऑयल कंटेंट देखते हैं हमारे ऑयल के पैकेट्स पर या नॉर्मली चीज़ों पर जिसमें ऑयल कंटेंट होता है, तो उसमें किसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे या ज़्यादा होंगे, कम होंगे. यू शुड कीप दैट इन चेक एज वेल. और सैचुरेटेड कार्बन्स जिस कंपाउंड में ज़्यादा होते हैं, जिस ऑयल में स्पेशली ज़्यादा होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पर उतना ही सॉलिड होता है. एंड टू कीप इन माइंड, सैचुरेटेड ऑयल जो होते हैं, सैचुरेटेड द ऑयल विच इज हैविंग मोर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दे आर नॉट सो गुड फॉर हेल्थ, okay, as compared with the unsaturated hydrocarbons. Fine. So that should be we should keep in mind. The next thing is combustion of unsaturated carbon compounds. Ki unsaturated carbon compounds, that means the carbon compounds which have the double bond and the triple bond. Fine. For example, ethyne I have taken here. Now, whenever these compounds will burn, what will happen? A yellow flame is produced and the black smoke is produced. Lot of black smoke is produced. Now, what is the reason for it? कि जब ये unsaturated carbon compounds burn होते हैं, तो black या सूटी smoke क्यों निकलता है? Fine. The another factor, yellow color. The color जो होता है flame का, that is related with the different compounds and their properties. और जो black smoke है, जो सूटी flame है, ये क्यों produce हो रहा है? इसके पीछे reason है incomplete combustion of that substance. कि उस फ्यूल का अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है जिसमें अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं, तो क्या होगा? सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होगा. फाइन. एंड ये सेकेंड रीजन क्या होता है? First reason for this is the incomplete combustion in air, and the second reason is the high percentage of carbon as compared with the alkanes. यहाँ पर क्या है आपको पता है? कार्बन ने अपने आप में ज़्यादा बॉन्ड किए हुए हैं. यहाँ पे कार्बन का जो परसेंटेज होता है, इफ़ यू कंपेयर द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो एल्केन में हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होता है एज इफ यू कंपेयर द कार्बन एंड हाइड्रोजन रेशो. और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के रेशो में कार्बन का रेशो ज़्यादा है. मीन्स जो कार्बन का अमाउंट है वो भी ज़्यादा है. उसके परसेंटेज ज़्यादा होने से क्या होता है? सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होता है. और सेकेंड, बिकॉज इनकम्प्लीट कंबशन भी होता है, बिकॉज सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो रहा है, एंड दैट्स द रीज़न कि यहाँ पर सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होता है. और ये कहाँ होता है? बहुत सारे कंपाउंड्स में. फाइन. अगर हम बात करें पेट्रोल और कोल की, पेट्रोल और कोल वैसे तो मिक्सचर है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स का, बट फिर भी इसमें ज़्यादातर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं. फाइन. बट साथ ही इसमें क्या होता है? सल्फर एंड नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट होते हैं. कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. और इसके होने से क्या है? सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी प्रोड्यूस होते हैं. सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दीज आर ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोल. Sulfur especially is more amount in the coal. Now the next question comes is, why do substances burn with the flame or some substances do not burn with the flame? कुछ substances आपने देखा होगा ना, flame उठती है, okay, और कुछ में नहीं उठती है. क्यों नहीं उठती है? Let's understand it. First, कुछ substances जिनमें की flame produce होती है. For example, this wood. जब ये wood burn होता है, then what happens? You would have seen that flame comes up. ओके. अगर आपने कभी चूल्हे पे खाना बनते हुए देखा हो, यू हैव सीन कि उसमें से काफ़ी, हम बोलते हैं आग की लपटें उठती है. वो क्यों होता है? बेसिकली द रीज़न बिहाइंड इट कि जब ये वुड को हम गर्म करते हैं, कभी गीली लकड़ी जलती है? हैव यू सीन इट? राइट टू बी. ओके. अगर आपने देखा होगा कि हम लकड़ी को जलाने से पहले से सुखाते हैं. क्यों? बिकॉज उसका एक टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर तक हमें पहुंचाना होता है. इसलिए इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने से पहले कोई चीज़ जलती नहीं है. Fine. Now, once the heat is given to this wood, तो इसमें क्या होता है? कुछ volatile substances present होते हैं. volatile substances कौन से होते हैं? जो quickly vapors में change आते हैं.
तो कुछ सब्सटेंसेस जो कि वुड में प्रेजेंट होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं, वो जल्दी वेपर्स में चेंज हो जाते हैं, और वो जैसे ही वेपर्स में चेंज हुए और उन्होंने दे कॉट द फायर, जैसे ही उन्होंने उन वेपर्स ने जलना शुरू किया, आग पकड़ ली और जलना शुरू किया, तो इसमें क्या होता है, फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड, इसमें फ्लेम बनती है। Okay, flame उठती है, like you can see here, and same you have seen in the when we studied the structure of candle flame, आपने 8th standard में पढ़ा होगा ये, fine. So आपको पता है कि when the same in case of wax here, wax candle I have written here, same in the wood and CNG also, fine. So when we talk about some substances which produce flame, जैसे कि हम आपके घर के किचन के गैस स्टोव में भी हम देखते हैं कि वो फ्लेम उठ रही है, हम देखते हैं कम है ज़्यादा है, अपने हिसाब से रेगुलेट करते हैं, फाइन. सो ये जो फ्लेम होती है वैक्स, इन केस ऑफ वैक्स कैंडल, नाउ वैक्स, लिक्विड वैक्स चेंजेस इनटू solid wax changes into liquid wax changes into vapors of wax, and those vapors of wax burn in that flame region, fine. So that's how the flame is produced. Now the other substances which do not produce flame are the ones like coal, charcoal. जब भी coal burn होता है कोई flame नहीं produce होता है. You would have seen, if you not this, observe this, that you can see here in the image, it is only giving out some amount of light, heat and light, okay, little bit. The flame is not getting produced here. So that means these compounds are not having so much of those volatile substances which are changing into vapors, and that's why they do not produce flame, okay. Now moving on next, the next reaction, that is oxidation of carbon compounds. Oxidation हम पहले भी study कर चुके हैं first chapter में. What is oxidation? Oxidation means the addition of oxygen or removal of hydrogen, fine. But here we are talking about the oxidation of carbon compound. That means first when we talk about oxidation during combustion, आपने देखा है कि combustion में normally हमारे carbon compounds के साथ या carbon के साथ oxygen add हो रहा है. That means it is a oxidation. Fine. So what happens during burning process? The complete combustion, complete oxidation of carbon compounds takes place. Okay. You can see here methane, when it is undergoing combustion, it produces carbon dioxide, water, heat and light. Fine. So this is about complete combustion. अगर हमें controlled combustion इसका oxidation करना है, controlled oxidation के केस में क्या होता है? We use some of the oxidizing agent, some of the chemicals जिसको हम बोलते हैं oxidizing agent. क्यों बोलते हैं? Because वो ऐसे agent है जो controlled oxidation करते हैं. जैसे हम बोलते हैं ना इंश्योरेंस एजेंट, तो इंश्योरेंस का वर्क करते हैं, सम अदर वर्क है. तो एजेंट का मतलब यहाँ पे क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मतलब क्या है हमारा, कि वो ऑक्सीडेशन को करते हैं, फाइन. जैसे हमने यहाँ पर यूज किया है हियर एल्कलाइन KMnO4, फाइन, पोटेशियम परमैंगनेट. यहाँ पर हमने यूज किया एसिडिफाइड K2Cr2O7, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, फाइन. अगर हम इन दोनों एजेंट्स को यूज करें या एक को यूज करते हैं, नॉर्मली एक को यूज करेंगे इस कंपाउंड के साथ, तो ये क्या करता है, इसका ये क्या है हमारा, राइट टू मी, इट इज इथेनॉल, फाइन, इथेनॉल, फाइन. सो दिस इथेनॉल गेट कन्वर्टेड इनटू द एसिड, ethanoic acid. If you would have done the nomenclature, okay. If not, see the my video of nomenclature of carbon compounds. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 1 carbon compound, sec 2 carbon compound, और ये हमारा बन गया है acid, fine. Now next comes is this potassium permanganate and this potassium dichromate. ये हमारे oxidizing agent की तरह यूज होते हैं और ये ऑक्सीजन को ऐड करते हैं. Now next comes is the addition reaction in carbon compounds. ये हमने जब when I taught you unsaturated carbon compounds, तब भी हमने स्टडी किया था कि unsaturated carbon compounds होते हैं वो addition reactions बहुत easily देते हैं. How? Now observe this, that when we see that because this unsaturated hydrocarbons में there is a double bond or a triple bond. For example, you can see in these two examples there is a double bond here and there is a triple bond here. So what happens? That it is easier for any substance to attack these bonds and the substance will come and attach here. So similarly यहाँ पर भी वो substance attach हो सकते हैं. So these are, and this addition reactions are really helpful whenever we have to manufacture any other compound from these alkene and alkynes. Unsaturated hydrocarbons को हम use कर सकते हैं और दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए या फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स बनाने के लिए, फाइन. जैसे
अब इसमें क्या होता है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस अदर टाइप्स ऑफ दिस एडिशन रिएक्शन, दैट इज हाइड्रोजनेशन. बट इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एडिशन डज नॉट टेक्स प्लेस दैट मच इजीली. इसके लिए हम यूज करते हैं कैटलिस्ट. कैटलिस्ट, ओके, दैट इज लाइक निकल एंड पैलेडियम. फाइन. अब निकल और पैलेडियम क्या है, कैटलिस्ट. बट कैटलिस्ट क्या है, इफ यू नो, राइट टू मी. ओके, when you talk about catalyst, these are the substances which cause a reaction. ये क्या करते हैं, एक रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, कॉज करते हैं, मीन्स उसको स्टार्ट करते हैं. सेकेंड, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं. ज़्यादा करना है, फास्ट करना है, स्लो करना है, कैसा करना है, दिस कंट्रोल्स देम. एंड सेकेंडली, नॉर्मली इंक्रीज करते हैं स्पीड को, रेट को. फाइन. एंड सेकेंड, विदाउट चेंजिंग और अफेक्टिंग द रिएक्शन, ये रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करते हैं. लाइक हमारे सिस्टम में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम बोलते हैं एंजाइम्स आर देयर. एंजाइम अपने आप में अटैच होकर कुछ नया सब्सटेंस नहीं बनाते, वो सिर्फ रिएक्शन में प्रेजेंट होते हैं और रिएक्शन को फास्ट या स्लो करते हैं. फाइन. सिमिलरली केमिस्ट्री में होते हैं कैटलिस्ट. फाइन. Moving on further, the next type of reaction which we are going to talk about is hydrogenation. That means addition of hydrogen. Fine. Here the addition reaction in carbon compounds is hydrogenation. यहाँ पर क्या हो रहा है, molecular hydrogen is added. मॉलिकुलर हाइड्रोजन को हम ऐड करते हैं एल्कीन या एल्काइन के अंदर और इसको कन्वर्ट करते हैं एल्केन्स में. दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर. फाइन. जैसे यहाँ पर यू कैन सी दिस इज इथीन. आपको पता है ना, 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम्स, डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया, ईन. सो ये बन गया हमारा इथीन. इट इज इन गैसियस स्टेट. अगर हम इसको मॉलिकुलर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इथेन में. ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेन में. फाइन. नाउ इट इज नॉट ओनली दैट हाइड्रोजन कैन बी एडेड. ओके, if you take example of some other examples are also available. For example, this ethene, when we make it react with the hydrochloric acid, अगर हम इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या हो जाता है, this one hydrogen get attached here forming CH3 bond and this chlorine get attached here and it forms CH2Cl. So it forms chloroethane. Fine, because it has become now single bond compound and chlorine has got attached with this compound. Fine. अगर आपको पता है ये अभी हमारे पास 2 कार्बन चेन ही है. अगर ये 3 कार्बन चेन होता तो हम we could have shown that it is 1 chloroethane, chloropropane और 2 क्लोरोप्रोपेन और ब्यूटेन और पेंटेन. ठीक है, क्लोरीन का पोजीशन भी हमें बताना होता है कि कौन से कार्बन पर अटैच है. फाइन. मूविंग ऑन फर्दर, व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. अब सब्स्टिट्यूशन एज यू अवेयर कि एक को हटाओ दूसरे को डालो. फाइन. सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स वो क्या करते हैं, दूसरे एटम्स को रिप्लेस कर देते हैं फ्रॉम द मॉलिक्यूल. फाइन. कैसे होता है ये, बट यूर अवेयर दैट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है हमारे, वो पहले से ही बहुत सेटिस्फाइड है, रिएक्टिव नहीं है. फाइन. सो इसमें क्या है हमारा, ये बहुत कंट्रोल्ड और बहुत कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर ही रिएक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें मीथेन की, मीथेन हमारा क्लोरीन से रिएक्शन करता है ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड फ्रॉम दैट पोर्शन ऑल्सो इन बाय यूजिंग यूवी रेज. ओके, यूवी लाइट को यूज करते हुए ये बनाता है क्लोरोमीथेन और क्लोरोमीथेन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नाउ अगर हम इस रिएक्शन को लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं तो ये बन सकता है डाइक्लोरोमीथेन ऑल्सो. फाइन. सो दिस इज द वे different carbon compounds undergo different types of reactions. हमने देखा, हमने क्या क्या स्टडी किया. We discussed about the combustion, we discussed about oxidation, जो कि combustion itself is like a oxidation process only, and we discussed about the controlled oxidation, जो कि हमने देखा है कुछ compounds की presence में होते हैं. Third thing, we discussed about the addition, and fourth, we discussed about the substitution reactions which the carbon compounds give. Fine. These are the all topics which your book has discussed about the chemical properties of carbon compounds. In higher classes, you're going to talk about study the more detailed portion of it. Okay, that's it for today. If you have any question, write to me. I'll still answer. Fine. And if you like the videos, share it with your friends.
and subscribe to the channel. As I've discussed with you earlier, this serves as a motivation for me and motivate me to create more videos for you, and hopefully this is helpful for you in preparation for your examination and for easy understanding of your concepts. Thank you for watching. Take care. Bye.